Okay. So today we are going to start a new chapter. You must have seen a flower. Have you? Yes, ma'am. Hmm. So by looking at the flower, just what are the parts you can see? Sepals, petals, stigma, anther, filament, and stem, root. Okay, great. Stem roots are the whole plant, No, ma'am. not a part of flower. Okay, okay. Yeah. Okay. So what are the different parts of the flower? If you know, plants तो हर किसी ने देखा होता है ना? Can you tell me Yes, different ma'am. parts of the flower? Stem, Hmm. root, Hmm. Stem, root, and fruit. fruit. Yes. Most important, leaf. Yes, ma'am. Leaf. Hmm. So the things which we are able to see externally on the plants and their adaptation also, this is known as what? Morphology. Okay. So first we are going to study what? Morphology of flowering plants. So study of external features of the organ of plants. If you have remembered the first chapter, वहाँ पे एक क्लासिफिकेशन का बेसिस पे क्या है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन होता है, रिमेम्बर? Yes, ma'am. सो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी कि इफ वी आर स्टडिंग ओनली द एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट एंड ऑर्गन्स ऑफ प्लांट regarding their adaptation also, so these study are known as morphology study of plant. Okay, any doubt what do you mean by morphology? Yes, ma'am. Okay. So this is what definition, study of external features of the organs of plant and their adaptation. This chapter is quite easy. You just have to remember some examples name. Okay. And there are many topics that have been removed from the syllabus also. So I'm going to cover the main current syllabus. Okay. So mainly this one completed organs of the plant include what? Root, stem, leaf, and flower. Okay. So we are going to study the flower first, then stem, and then leaf will come, and afterwards the flower will come, which is most important part, or we can say the sexual part of the plant. Okay, sexual part. Others are what? They are not sexual part, and only flower is the sexual part of the plant. Uh, Still, some modifications are there. We can grow, new plant can grow from root, stem, or leaf also, but these are exception or modification of the root, stem, or leaf. So from the first root, root is what? Non-green part of the plant. Okay, we have seen the root, and it is what grows towards the downside, and it is growing from the downside, and it is into the soil, and it is not above the ground. So it is non-green part of the plant, and that grows downwards. इसका movement क्या रहता है growth का? Downwards into the soil and not upwards. So first point, underground part, it is non-green. Non-green, why non-green? Because it does not have chlorophyll. क्लोरोफिल ही नहीं है इनमें, इसलिए दे आर नॉन ग्रीन. फिर नो नोड्स और इंटरनोड्स. नोड्स और इंटरनोड्स कहाँ होते हैं? जो अपर पार्ट होते हैं प्लांट के, लाइक स्टेम्स. स्टेम्स में क्या है? ये नोड्स रहेंगे, और नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? इंटरनोड्स. तो रूट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, दे जस्ट ग्रो एंड देयर इज नो नोड्स और इंटरनोड. ओके. अनदर फीचर ऑफ रूट इज व्हाट? फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल. अब देखो, व्हेनेवर वी ग्रो एनी सीड, सो सीड का जो इंसर्टेड पार्ट रहता है, radical is what? Downside, and plumule is what? Upward side. So plumule form what? They form shoot, and radical form what? Root. So root are formed from radical. That is why most important point कि root कैसा से बनते हैं? ये बनते हैं रेडिकल से. अब ये 3 पॉइंट. पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मीन्स कि whenever the roots grow, they grow towards the gravity side, means towards the earth side. अर्थ की तरफ जाते हैं, यानी कि मीन्स दे मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी. दैट इज वाई पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. ओके. देन पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन्स कि दे गेट इंसर्टेड इनटू सॉइल टू टेक वाटर. वाटर को लेने के लिए वो डीपली इंसर्ट होते चले जाते हैं सॉइल में, इसलिए पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. फिर नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म मीन्स व्हाट? Since they are inserted into the ground, they are underground, there is no sunlight, they don't absorb sunlight. अब जब सनलाइट ही नहीं एब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या है? निगेटिव है टुवर्ड्स व्हाट? फोटोट्रॉपिज्म. यानी कि सनलाइट नहीं है. ट्रॉपिज्म मीन्स नेचर होता है. ठीक है. सो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब कि टुवर्ड्स द अर्थ. पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन्स कि अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द वाटर ऑल्सो, एंड नेगेटिव मीन्स व्हाट? दे आर नॉट अट्रैक्टिव और दे आर नॉट गेटिंग लाइट.
So these are some important features of the roots. Then what are the major functions? These three functions are most important functions of the roots: सपोर्ट एंड एंकरेज. सी, एक पूरा प्लांट किसके ऊपर डिपेंड होता है? यहाँ से पूरा प्लांट डिपेंड होता है किसके ऊपर से? रूट. इफ द रूट्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ to contain within the soil, then that those roots support the whole tree or whole plant. पूरे प्लांट को जो सपोर्ट और मजबूती प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? रूट्स करते हैं. ठीक है. रूट्स आर क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट डिटैच फ्रॉम द सॉइल. Then absorption of water and mineral, of course, root are having root hairs, zones, different kind of zones are there in root. Later you will see. So those zones are able to help what? They are helpful in absorption of water and different kind of minerals also. If they are absorbing the water and minerals, that only help the xylem and phloem to transport water to the whole plant. तो प्लांट का सबसे मेन काम कौन कर रहा है? रूट. अगर रूट अब्सॉर्ब ही ना करे डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स और वाटर, सो प्लांट विल डाई. ओके. सो अनदर मेजर फंक्शन. नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ plant growth regulators. So this we will study in different chapter. Plant growth regulators like abscisic acid is there, ethylene is there, cytokinin is there. So many kind of plant growth regulators are there. Basically 5 we have to study. Just give me a minute. Yes. Safia is not able to join, so we can leave. Just give me a minute again. Yes. So where was I? Yeah. Synthesis of plant growth regulators. So in total, basically 5 PGRs are there, which is in a different chapter one. So उस पीजीआर में से 2 या 3 पीजीआर ऐसे जिनका सिंथेसिस रूट के थ्रू होता है. दैट इज व्हाई रूट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल. वन मोर मिनट. Yeah. Again, let me explain what are the 3 main functions of root, because I was getting disturbed again and again. So first function is providing support or protection, which we technically say anchorage. Okay. Now the second function is absorption of water and minerals. Why they absorb water and minerals? To provide nutrition and different kind of elements or minerals which are beneficial for the plants. Okay. And the third one is what? They are helpful in synthesis of different plant growth regulators. Okay. And these plant growth regulator also helpful in development of any kind of plant. Okay. If something is there like ethylene, kya karta hai? Early ripening of fruit mein ethylene is very helpful. We can say abscisic acid is there, that helpful in stopping the growth of the plant. Then cytokinin is helpful in starting the growth of the plant. So many different kind of plant growth regulators are there, which some of which are synthesized by both root. Okay. So any doubt in the root part? What does this root do? Okay, Sana and Faika, is there any doubt? मैम नोट्स इंटरनोड्स. Okay, nodes and internodes. अभी तो वो stem part में आएगा. Still, let me explain. If these are this one is what? Stem. Okay. एक स्टेम का पार्ट है जहां से लीव्स वगैरह ग्रो करते हैं. ठीक है. तो ये जहां से लीव्स ग्रो करेंगे, जिस जिस एरिया से, जिस जिस पॉइंट से, ठीक है, तो दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज नोड्स. दीज आर नोड्स. दिस वन. ओके. एंड एक नोड से दूसरे नोड के बीच का जितना भी डिस्टेंस है, ये वाला पार्ट, दीज आर इंटरनोड्स. ठीक. नाउ एनी डाउट? ये बेसिकली अभी स्टेम जब हम लोग पढ़ेंगे तो आई विल टेल वंस अगेन. एनी डाउट नाउ? Nodes and internode? No, ma'am. Okay. Let me erase it from here because it is the part of stem. Now we will see the regions of root. क्या क्या regions होते हैं? I have drawn the diagram also, but my diagram is very bad. See. We will start from the bottom. कोई भी plant या regions है root का, तो root are already I have told that these are positive geotropism. So they grow towards the underground like this. Means they are having their tip towards the ground and which are continuously getting rubbed from the soil and from the different kind of rocks if they are present in the soil. So on that zone, means the tip, this zone is called as what? Root cap. Okay? And this zone is the most pointed, we can say, and this zone is only the one which is scratching the ground. Like यहाँ पे अगर soil है तो it is scratching the ground and move
moving forward more deeply into the ground. Okay, so this is done by root cap. And root cap is what? Distal most end, यानी कि ये सबसे आखिरी का end है. Like if we are see my hand is there, so our fingers are what? Most distal end from our shoulders. So root cap is what? It is most distal end of the root, whole root structure. Okay, and at the same time the proximal part will be what? The upper, like the area here, shoulder area is like this. So this one is the proximal part of the root, and our finger will be what? The distal part, that is the root cap. So same as with the root system. Okay, जो सबसे ऊपर का एरिया है वो क्या है? प्रॉक्सिमल पार्ट है, एंड सबसे नीचे का एरिया है वो है रूट पार्ट, और वो रूट कैप का पार्ट क्या है? डिस्टल एंड. ठीक, proximal end में we will find root hairs and different kind of root fabrics. Region of maturation will be there, and distal part में root cap. ठीक, next one is root cap. क्या है? living है. इसमें living cells होते हैं. क्यों? क्योंकि they are continuously growing and moving forward inside the soil. Now these root cap also provide protection to those new cells which are getting formed. Okay, and there are having यहाँ पे जो रूट का पेरिफेरल पार्ट होगा, यानी कि दिस आउटर मोस्ट लेयर. सो ये रूट कैप का जो पेरिफेरल पार्ट है वो गोल्जी बॉडीज में रिच होता है. ठीक है, रिच इन गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडीज में रिच मीन्स दे आर एबल टू सिंथेसाइज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स, एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन इज डन बाय गोल्जी बॉडीज. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कंटिन्यूसली न्यू सेल्स बन रहे हैं, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स एंड कोडिंग विल बी रिक्वायर्ड. सो गोल्जी बॉडीज पेरिफेरल सेल्स में ज्यादा है. कहाँ पे? रूट कैप के पेरिफेरल सेल्स में. देन वी कम टू रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. अब देखो, जब रूट कैप कंटिन्यूसली यहाँ नीचे अंडरग्राउंड की तरफ धसा चला जा रहा है, सो its outermost parts what is getting rubbed again and again. So जब वो outermost part उसका rub हो रहा है, उसके cells damage हो रहे हैं, तो something needed so that वो जो cells गायब हो रहे हैं या dead हो रहे हैं या damaged हो रहे हैं उसका replacement हो सके. So there is a region, and that region is called as what? Region of meristematic activity. This green region, and this region is region of meristematic activity, where new cells are getting formed and getting replaced to form root cap. ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ न्यू सेल्स बनेंगे एंड ये न्यू सेल्स रूट कैप में कन्वर्ट हो जाएंगे. देन दिस रूट कैप विल again perform its function of going inserting itself into the soil. Then here comes root of elongation. This one, this region, this is the that region where the root grows in length. Okay, this region help in vertical division of the cell. Means continuous division रहेगा like this. No lateral division, vertical division will be there, and it will be helpful in lengthening the root part. Okay, and this is the region of maturation. Yes, this region is region of maturation. And why this is the region of maturation? Because जो भी cells, those cells which have stopped growing and they have getting matured, this region will include those kind of cells. इसी region of maturation में क्या है? root hairs present हैं like this. ठीक है, and these root hairs are also two kinds in the region of maturation. कौन कौन से? पहला तो होगा lateral roots और फिर root hair ही. ठीक, so these root hairs are arise from, like if you see the structure of root, so epidermis will be the layer, then after that epidermis many different kind of layers will be there, then another layer of epidermis, then pericycle layer will be there. Like epidermis layer is there, then some different kind of layer, other layer will be there, again the epidermis layer, then pericycle layer will be there. यहाँ पे भी pericycle layer. So root hairs arise from these epidermis. ये epidermis है मान लो, तो root hair क्या है? यहाँ से arise होंगे. Outermost cell of the root से ये arise हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं root hairs are what? Exogenous in nature, and they are unicellular, क्योंकि हर exocell epidermis के सेल से root hairs arise होते हैं. ठीक, thin होते हैं,
ये क्यों अराइज होते हैं? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर जितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, एपिडर्मिस से भी रूट हेयर अराइज करते हैं, थिन होते हैं। लैटरल रूट क्या होता है? जो पेरीसाइकिल से अराइज होते हैं। ये वाला लाइन क्या है? पेरीसाइकिल। सो पेरीसाइकिल क्या है? इनसाइड की तरफ है, देयरफॉर इसका ओरिजिन कैसा हो जाएगा? इंडोजिनस ओरिजिन। So there are two different kind of root are found in the region of maturation. One is root hair and another one is lateral roots. So lateral roots are endogenous in nature and root hairs are exogenous in nature. Any doubt? Let me write one point also. Any doubt? This question has been asked. That is why I am writing where root hairs are found. So root hair arise from, or we can say found from the region of maturation. ओके यहाँ इस फिगर से भी देख लो, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन इज व्हाट? जहाँ पे रूट हेयर्स बन रहे हैं, दिस इज रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। उसके बाद रूट हेयर्स वही सेम यहाँ से निकलेंगे, जहां से रूट के लेंथ में इंक्रीजमेंट हो रहा है या रूट का लेंथ बढ़ रहा है, दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज व्हाट? वेयर न्यू सेल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड regularly and continuously. Root cap is what? These are most inner part and these are living cells and they continually move themselves towards the downside of the soil so that root can emerge into the soil more and more. Okay, so any doubt in these two slides? Okay, I suppose no doubt is there, so we will move to the slide. Flowering plant. The plant body consists of the main axis, which may be branched or unbranched, bearing lateral appendages. The main axis divided into parts. कौन कौन से parts होते हैं? Morphology of flowering parts है तो flowering parts के कौन कौन से part होंगे? Flower, fruit, stem, leaf, nodes and internodes will be there. Buds will be there. Primary root, secondary root means root system is there whole. Okay, so we are going to study all these. First, we have seen the root one. Root system is what? Underground root system develops from the radicle of embryo and helps in fixation of plant as well as absorption of water and minerals. Shoot system क्या होता है? Aerial shoot system develops from the plumule of embryo. It contains root, stem, leaves as vegetative part and flower, fruit and seeds as reproductive part. Vegetative parts are involved in various functions like structural organization, fixation, absorption, nourishment, growth and maintenance of various components. And reproductive parts are for sexual reproduction and germination of seeds, makes new plant. So all in all ये क्या बोल रहा है कि जितने vegetative parts हैं like vegetative parts like what? Root, stem और leaves, ये लोग क्या करते हैं? mainly प्लूमोल से डेवलप होते हैं एंड फ्लावर, फ्रूट और ये जो सीड्स रहते हैं ये क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, तो खाना बनाते हैं, मीन्स लाइक दे प्रोवाइड होल न्यूट्रिएंट्स एंड नरिशमेंट टू द प्लांट एंड ड्यू टू दीज वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट ग्रो करते हैं एंड due to these vegetative parts only the cell growth in size, makes new cell and maintenance of various other components get formed due to these. Now reproductive part क्या करते हैं? ये लोग mainly involved होते हैं sexual reproduction में, new cells बनाने में, new plant के development में. Okay, and basically reproductive part का काम होता है नए seeds का develop करना. Okay, now root we have already studied. Let's see what is in the slide. Root is non-green due to the absence of chlorophyll, cylindrical and descending part that normally grows downward into the soil. Downward क्यों? क्योंकि उसको नीचे soil में ही रह के और water and mineral का absorption करना है. It does not bear leaves, buds and it's not distinguished into nodes and internodes. इसके पास leaves भी नहीं होता, buds भी नहीं होता, node और internode भी नहीं होता. Okay, have I told you about bud? Anywhere have I told you about bud? No. So what is a bud? It is also actually part of the stem. कि अभी stem में देखा जाएगा. So it is like if it is this one is a stem suppose. So अगर stem में जब भी leaves arise होते हैं, from that leaves point only new opening starts to develop. These kind of like, so these are what? Buds. Okay. And these buds are early क्या रहते हैं? नॉन ग्रीन रहते हैं, सॉरी अर्ली ये लोग क्या रहते हैं? ग्रीन रहते हैं और ये लोग क्या रहते हैं? वेरी ठीक है. Buds are
very small and immature, and they are green. Okay, at the earlier, and later on these birds grow into new stems or different kind of lateral branches give out. So these birds are a part of stem only. Okay, now in this slide, apparently everything about. Any doubt? Anyone? No, ma'am. Okay. So what are the regions of root? Here I think 5 points are there. Yes. देखो पहला क्या है? Root cap. Root cap is also known as calyptra. This I have forgot. The root is covered at the apex by the thimble or cap-like structure. Okay, this one is important point. Root cap का structure कैसा होता है? Thimble. Thimble shape is like, have you seen like बचपन में we used to do like rolling the paper out and inserting it into our fingers like जो हम लोग चुड़ैल बनने वाला खेलते थे कभी कभी. सो वो थिम्बर लाइक कवरिंग अ कोन शेप, इंसर्टिंग अ कोन शेप लाइक थिंग इनटू आवर फिंगर्स. सो सेम वे ऐसे. ठीक है, तो रूट कैप भी क्या है? थिम्बल शेप में है, कोन शेप, जो कि क्या है? पूरे रूट को कवर किया हुआ है. ओके, नाउ cap like structure called the root cap. It protects the root meristem from friction of the soil particle and also protect tender apex which allows the passage of root through the soil. मीन्स क्या क्या मैंने बताया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. कैसे? रूट मेरिस्टेम जो कि नए नए सेल्स बनाते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सॉइल के पार्टिकल के फ्रिक्शन से. लाइक रूट कैप अपने खुद को घिसता रहता है, बट जो नए सेल्स फॉर्म होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. ऑल्सो प्रोटेक्ट द टेंडर एपिक्स मीन्स कि जो रूट का वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उन सारी चीजों को भी ये प्रोटेक्ट करता है. Now examples में lemna, ecornia, roots of parasitic plants lack root cap. Okay. जितने भी parasitic plants होंगे उनके पास क्या है? root caps नहीं होता. Now the second point is what? Growing point or meristematic zone. So growing point क्या है? It is the small about 1 mm in length thin walled region having dense protoplasm. Dense protoplasm क्यों है? क्योंकि इसको continuously division देना है. It lies partly within and partly beyond the root cap. देखो यहाँ पे कुछ तो रूट कैप के बाहर है और कुछ क्या है? रूट कैप के अंदर ही है. Cell divide regularly and repeatedly for elongation. Elongation of root के लिए पूरा ये continuous division में रहता है. It is responsible for the growth of root. रूट के ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? This region of meristematic activity. Okay. Now zone of elongation क्या है? It is situated behind the meristematic region, यानी कि इस region के बाद आएगा. The cells elongate speedily and increases the length of root. Root के length को कौन बढ़ाता है? Zone of elongation. The cell of this region can all absorb water and minerals from the soil. इस region में क्या होता है? Water and mineral का absorption भी होता है. Then root hair zone. It is the region where primary tissue differentiate into the root. यहाँ पे जो primary tissue है वो root and root hairs यानी कि lateral root और root hairs यहीं से बनना शुरू होते हैं. ठीक. Then vascular tissues like xylem and phloem are formed. This zone is most important part of the root for absorption of water. Most important part कौन सा है? Root hair zone. Most of the water from the soil. The root hair is increases the exposed surface of the area for absorption. Root hair का function ही यही है कि surface area for absorption of water उसको बढ़ा दो. The root hairs are absent and the roots are not well developed in aquatic plant. क्यों? क्योंकि एक्वेटिक प्लांट खुद ही पानी में है, इसलिए रूट हेयर वहां पे होता नहीं है. एंड रूट्स भी बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं होते हैं क्योंकि रूट्स का काम ही है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. एंड एक्वेटिक प्लांट में पानी भरा ही होता है. नाउ जोन ऑफ मैच्योरेशन. इट कंटेन्स मैच्योर सेल्स, जो सेल्स ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं. इट फॉर्म्स द परमानेंट जोन ऑफ द रूट्स फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द रीजन. एग्जाम्पल में डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म, जो बड़े बड़े पेड़ जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट्स के ट्रीज एंड पेड़ हैं वो भी क्या है? जोन ऑफ मैच्योरेशन के थ्रू ही मतलब बाहर निकलते हैं. मोस्ट अपर मोस्ट पार्ट ये जोन ऑफ मैच्योरेशन. इसके बाद ही क्या होता है? पेड़ का बनना शुरू होता है. यहाँ से क्या होता है? पेड़ बनना शुरू होता है ऐसे. ठीक. सो एनी डाउट इन दीज रीजन्स? आई सपोज अगेन नो डाउट. समटाइम्स एनसीईआरटी डज व्हाट? ये पूरा जो फिगर दिया हुआ है ना, इसमें दे रिमूव दिस वन, लेबलिंग हटा देते हैं. एंड दे गिव ऑप्शंस कि नंबर 1 इज दिस वन, लाइक 1 2 3 4 और 5. सो दे गिव ऑप्शंस लाइक दिस कि 1 is this zone and 4 is this zone. Identify the zone. So you have to remember the figure also. It is important that you
learn. Okay, if there is no doubt, then I'm moving forward to the next slide, which is type of root system. Now इस फिगर से भी देखो, tap root system and adventitious root system. Again, adventitious root is divided into fibrous one, foliar, and true adventitious. So this much classification is not given in your syllabus, means current year syllabus. So I'm going to stick on to these three. Tap root system क्या होता है? जो ज्यादा elongation नहीं करता, and very few root hairs are there, which is mostly found in dicot ones. फाइब्रस रूट क्या होता है? स्मॉल यानी कि मोनोकॉट प्लांट्स जो ज्यादा ग्रम्पी नहीं होते हैं, विच आर सॉफ्ट काइंड ऑफ प्लांट्स, सो उसमें पाया जाता है क्या? फाइब्रस रूट, क्योंकि वो रूट्स अपने आप को फैला लेते हैं. ठीक है. एंड एडवेंटिशियस रूट, अगर रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, दोज काइंड ऑफ रूट्स will come into adventitious root. Okay, so these three kind of roots are there. We can see from the slide also. Tap root system. Tap root develops from the radicle of the embryo of a seed. Most of the plant primary root persists and becomes stronger to form tap root. Tap root में strong trees and gymnosperms का formation होता है. Mainly dicot के plants tap root का use करते हैं. The first root formed by elongation of radicle is called primary root. It continuously grows and produces lateral roots called secondary roots. Further branches of secondary roots are called tertiary root and so on. These type of root are present in dicots. Example you have to learn. Peas and gram. Especially pea ka you can learn. Okay. Important one is pea. Now, adventitious root system is where the root developing from any part of the plant other than the radicle are known as adventitious root. इसका भी example you have to learn. These are usually found in monocots. Okay, that means can be further classified into fibrous, foliars, and true adventitious. Okay, let us see that also. This fibrous one will come later, I think. Let us see. See, taproot system and fibrous and adventitious. We have classified these mainly into three. Now, nowadays mainly taproot and adventitious root classification हो गया. अब adventitious root में ही fibrous root आएगा. Means sub classification is there. So, first one is what? Fibrous root. The primary root soon gets replaced by cluster of slender thread-like roots originating from the base of a stem. Monocotyledons. यहाँ mainly monocots रहते हैं. ये mainly monocots का feature है. Example में wheat, rice, and onion. You have to learn the example of wheat. This one, Triticum vulgare. Now, foliar roots क्या होते हैं? These roots develop from the leaf. जो भी roots leaf से develop होते हैं उन्हें foliar leaves कहते हैं. And example में pogostemon. You have to remember. Now, true adventitious root मतलब कि क्या है कि ये नोड्स और इंटरनोड से डेवलप होते हैं. एंड इसका एग्जांपल में यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ कोलियस एंड नथिंग एल्स. आल्सो यू कैन रिमेंबर banyan tree. Banyan tree will come also in this one. You see, these roots develop from the nodes and internodes of the stem. Crop roots of banyan. Yeah, see, banyan is there. So banyan tree and this coleus. Climbing roots of money plant room from the stem were partially immersed in water. Roots from the nodes oxalis depends. See, these are not your syllabus. That's why I'm continuously going on. You have to remember that taproot, fibrous root, and adventitious root. Now here, adventitious root is further divided into three kinds: fibrous, foliar, and true adventitious. Fibrous example is onion and triticum. Foliar is what? Pogostemon. True adventitious is what? Coleus or banyan tree. You have to remember the examples and not the definition. Okay. Next is modification of root, which is not in the syllabus. Still, I'm going to read once. Okay. Example ही याद करने हैं from the neat point of view. If you are learning the example, you just learn that conical root का example क्या है, fusiform root का example क्या है, like this. Okay. So conical root क्या है? Fleshy tap roots हैं that resemble a cone. Cone like a structure like this one. इसका example में आएगा carrot, Daucus carota. Fusiform roots क्या है? Spindle shaped होते हैं, swollen होते हैं. ठीक है, देखो spindle shaped है, swollen in the middle and gradually tapers at both the end. इसके example में क्या है? Radish. ठीक, मूली. Then napiform root क्या होता है? Almost spherical, picture shaped at the base and tapers abruptly at the lower end, like beetroot. Okay, turnip, Brassica repa. Tuberous root क्या होते हैं? The primary roots become thick and fleshy and do not attain any definite shape.
एग्जाम्पल मिराबिलिस जलापा, ट्यूबरस रूट लाइक कांदा। ओके, कोई भी शेप ले लेंगे, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इरेगुलर होते हैं। देन नोड्यूलेटेड टैप रूट क्या होता है? इन दिस secondary, tertiary and sometimes primary root bear many small irregular swellings called root nodule which contain countless minute nitrogen fixing bacteria of genus Rhizobium। ठीक है, एग्जाम्पल में ग्राउंडनट एंड पाइसम सटाइबम। सो इसमें क्या कह रहे हैं, नोड्यूलेटेड रूट क्या होते हैं? कुछ में क्या होता है, जहां पे पानी की कमी होती है तो वो लोग क्या करते हैं, नोड्यूल्स को अपने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम है उसको कंटेन करके नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, यानी कि मोर न्यूट्रिएंट्स, for more nutrients these kind of plants develop rhizobium around them, and due to this rhizobium around them they are able to have their nutrients in a better way। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, पाइसम सटाइवम। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द एग्जाम्पल्स एंड नथिंग एल्स। देन nematophores, this one is important। nematophores one is important as these are special roots that are developed in mangrove plant, यानी कि जहां दलदली एरिया है वहां पे ये ग्रो करते हैं। ठीक है, द nematophores और aerophores और respiratory roots, कैसे रूट्स होते हैं? रेस्पिरेटरी, यानी कि वो लोग रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। एंड दे आर अबव द ग्राउंड, मीन्स दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ओके, दे आर अबव द ग्राउंड, क्योंकि बेसिकली क्या होते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होते हैं रूट, बट ये क्या है, निमेटोफोर्स में नेगेटिवली होते हैं। दे आर अबव द ग्राउंड ग्रोइंग एंड have breathing pores called nematophores which are present on the tip of vertical roots which help in getting oxygen for respiration। okay, example में again you can remember the ficus or banyan tree। have you seen like different kind of roots grow over their trees? lateral branches grow करते हैं, so वो क्या रहते हैं, roots ही रहते हैं। ठीक है, any doubt in this modification of taproot system? No, ma'am. Okay, then again ये भी syllabus में नहीं है, modification of adventitious root, fasciculated root, nodules root। see, name and example and nothing else। again I'm saying fasciculated roots means these arise in cluster from the base of stem। example में dahlia and asparagus। you have to remember the name dahlia, most important। okay, fasciculated roots मतलब क्या कि ये रूट्स क्या होते हैं, नॉर्मली रेडिकल से जो रूट्स डेवलप होते हैं, यहाँ रेडिकल से नहीं डेवलप हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, स्टेम्स, बेस ऑफ स्टेम, यानी कि अगर स्टेम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ इस स्टेम के स्टार्टिंग से क्या हो रहा है, रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, दीज आर fasciculated रूट्स। और फिर इसका एग्जाम्पल में डायलिया। देन आता है क्या, नोड्यूलस रूट। दीज रूट्स हैव स्वेलिंग अकर ओनली नियर द टिप्स। एग्जाम्पल में हल्दी एंड आमला। हल्दी इज इम्पोर्टेंट, कुरकुरा, इसका नेम, साइंटिफिक नेम इज इम्पोर्टेंट, मेनली कुरकुमा अमेडा। ठीक है, हल्दी कैसे डेवलप होता है, नोड्यूल्स के फॉर्म में, लाइक दिस। उसका प्रॉपर शेप नहीं होता, बस नोड्यूल्स मोटे मोटे निकलते हैं ना। then tuberous root, single root tuber, these are swollen without any definite shape। Ipomia batatus, it is very important, Ipomia batatus। ठीक, स्वीट पोटैटो यानी कि कांदा, उसका क्या है, वही चीज, स्वेलन होते हैं, कोई शेप नहीं होता। देन prop pillar roots, the prop roots grow as a horizontal branches of the stem and grow vertically downwards। they become thick pillars like and provide mechanical support to the giant trees। example में banyan tree यानी कि ficus bengalensis। then stilt root, these are small thick supporting root from the basal nodes of the main stem। they provide mechanical support। sacrum officinarum यानी कि sugarcane, zea maize यानी कि मेज, दोनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। देन क्लाइंबिंग और क्लंजिंग रूट्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स में मिलते हैं। एग्जाम्पल में पोथोस यानी कि मनी प्लांट। नेक्स्ट आता है एस्टिमुलेटरी यानी कि फोटोसिंथेटिक रूट। दीज रूट्स कैन सिंथेसाइज फूड, दे हैव क्लोरोफिल एंड एरियल और हैंगिंग रूट्स होते हैं ऑर्किड्स। ठीक, पैरासिटिक में क्या है, सकिंग रूट्स। एग्जाम्पल में कस्कुटा यानी कि डॉडर प्लांट और अमरबेल। ठीक, ये सारे के सारे क्या है, एडवेंटिशियस रूट है, मीन्स कि ये लोग रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी डेवलप होंगे, either from the stem, either from the leaves, either from their different kind parts of the stem, either from nodes or internodes। so ये सारे के सारे adventitious roots में आएंगे। functions of root में I have already told you, they provide anchorage। major function क्या है, fixation। root provide fixation to the plants with soil। here it should be plant को soil से fix करके कौन रखता है, root। absorption, root absorb water and minerals। storage, root of many plants store food। जब खाना तैयार हो जाता है तो कहाँ स्टोर होकर रहता है, रूट्स में।
Aeration means plant growing in water-logged soil or marshy area have special roots जो कि nematophores कहलाते हैं. उनके पास क्या है, respiratory organs भी होते हैं, यानी कि respiration में भी वो लोग मदद करते हैं. Then conduction, root transport water and minerals upward direction for the use of stem and leaves. ठीक, so तीन main basic function है, and other than these three many functions are there which are not primary functions. Any doubt in the root part? Okay. No, ma'am. I suppose no doubt then. Stem. अब देखो ये नीचे हमारा क्या था, root part. Now we will move forward to the stem part. This part. ठीक है. It is not the underground. It is aerial part of the plant. Stem is what? Aerial part of the plant. First point. दूसरा क्या है, ये green होते हैं जब young रहते हैं, यानी कि जब नए नए बने रहते हैं तो then these are green in color usually. And next, when they grow mature, they become woody and hard, and they contain nodes and internodes. इसी nodes और internodes से क्या होता है, flowers and leaves arise होते हैं. ठीक, मेन फंक्शन क्या है, लीव्स जो हैं उनको रूट से कनेक्ट करना. ठीक है, इन्हीं लीव्स पे क्या है, अगेन यही लीव्स फ्लावर बनाते हैं, यही लीव्स बर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यही लीव्स फ्रूट रिलीज करते हैं. सो बेसिकली लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, एवरीथिंग को कौन रूट से कनेक्ट करता है, स्टेम. स्टेम के थ्रू ही क्या होता है, रूट अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड, एवरीथिंग स्टेम से निकल जाता है. फिर यहाँ से लीव्स और फ्लावर और फ्रूट कहाँ जाएंगे, कहीं भी जाना है बेसिकली तो वो किससे जाता है, स्टेम के थ्रू जाता है. रूट का रूट को बेसिकली करने ऐसे करते हैं, to connect root from two different part of the plant. It is the work of stem. Okay, stem does what? Main function is what? Main function of stem is to connect root with different other organs of the plant. This one will be more suitable. Organs of the plant. Okay, not only leaf, flower and bud and other kind of fruit. Okay, so सबको किससे कनेक्ट करेगा, रूट से. मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज दिस वन. नाउ वी विल सी द स्लाइड ऑल्सो. Here also many things are not in the syllabus, like underground stem or modification of stem, like branching of stem. It is not in their syllabus. Stem is ascending part of the axis bearing branches, leaves, flower and fruits. सब कुछ कहाँ दिखेगा, स्टेम पे ही दिखेगा. It develops from plumule of the embryo of a germinating seed. It shows distinction into nodes and internodes, where node is the region from where leaves are born and internodes are the region between two nodes. Like this one. This are nodes. ये क्या है, nodes. इन दोनों के बीच का रीजन क्या हो जाएगा, internode. Now it bears bud which may be terminal or axillary. Now buds की बात हो रही है अगेन. अगर buds डायरेक्ट यहाँ लीफ के साइड से निकले तो वो क्या है, एक्सिलरी, और टॉप से अगर बर्ड्स का फॉर्मेशन हो तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनल. ओके, अ बर्ड कैन बी डिफाइंड एज कंडेंस एम्ब्रियोनिक shoot that has a growing point surrounded by closely packaged immature leaves. अब जैसे ही लीफ का ग्रोथ होना रहता है, okay, at that time I think I said stem by mistake. So जब जैसे ऐसे ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या कंटेन किए रहते हैं, क्लोजली पैक्ड लीफ. सो जैसे ही क्या कहते हैं, खुलना होता है तो ये क्लोजली पैक्ड लीव्स आर, दीज आर कॉल्ड व्हाट, बर्ड्स. बर्ड्स क्या है, समटाइम्स दे आर वेरी हार्ड एंड समटाइम्स दे आर सॉफ्ट ऑल्सो. सो ये जो छोटे छोटे कली होती है लीव्स की, जो जिसको बस खोल के लीव्स बनना ही होता है, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, बर्ड्स. ओके, कुछ क्या होते हैं टॉप पे ही डेवलप होते हैं और कुछ क्या होते हैं लीव्स के साइड में ही जस्ट हल्का हल्का निकले हुए रहते हैं कि अभी ये लीव्स बने हुए. व्हेन बर्ड grows, the internodes become longer and leaves spread out, resulting in formation of young shoot. ठीक, forms of stem में क्या है, aerial, subaerial और underground. Now ये भी again these are not in syllabus, so I am just moving forward. In most of the plant, stem grows above the soil. These are aerial stem. The aerial stem of some plants trail creep on the ground. They are called subaerial stem. In some plants, these stem grow in the soil and are called underground stem. अब देखो क्या क्या बोल रहा है कि जो स्टेम अंडरग्राउंड पे ग्रो करते हैं उनको अंडरग्राउंड बोल रहे हैं. एरियल स्टेम मतलब कि जो अबव द ग्राउंड ग्रो कर रहे हैं, नॉर्मली जो जनरली ग्रो करते हैं वो एरियल स्टेम होते हैं. सब एरियल में क्या है कि आधे ऊपर रहेंगे, आधे क्या रहेंगे, ग्राउंड से अटैच रहेंगे. ठीक है, तो उसमें वो किस कैटेगरी में आएंगे, सब एरियल वाले में.
Now again you have to remember the example here also. Aerial stem में क्या क्या है, दो काइंड है, reduce and erect one. Reduce वाले में क्या है, it is reduced to small disc, the nodes and internodes are not distinct. Example में carrot, radish, turnip etc. इसमें क्या है, नोट्स और इंटरनोड्स जल्दी नहीं डिस्टिंग्विश होते हैं, बहुत छोटे छोटे गट्ठर में होते हैं, ठीक है. देन इन सम एक्वेटिक द reduced discoid stem is green and flattened to float on the surface of water. It does not bear leaves. Example में वोल्फिया याद रखना, लेमना एंड वोल्फिया, वोल्फिया याद रखना, ठीक है. इन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर also reduced non-green stem is found. Example में garlic, onion and lily. अंडरग्राउंड वाले में क्या हो रहा है, रिड्यूस सिस्टम में गार्लिक या अनियन में बहुत ही छोटे अमाउंट में क्या होता है, स्टेम बहुत रिड्यूस हो जाता है. सो इसमें रिड्यूस वाले में क्या है, गार्लिक एंड अनियन. नाउ इरेक्ट स्टेम में क्या है, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिमेन इरेक्ट और अपराइट विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट. नाउ सब एरियल, सब एरियल में क्या क्या आएगा, अपराइट वीक एंड प्रोस्टेट वीक. वीक मतलब कि ऐसे रहेंगे लेकिन अब तेज हवा वगैरह चलेगा तो इसे झुक जाते हैं, ठीक है. These stems are weak which climb up a support to expose their foliage and reproductive organs. These are two types, twinners and climbers. Twinners में क्या आएंगे, long, slender, very sensitive coil around apply. Examples में butterfly, pea, cuscuta, dolichos, लबलब is important, ठीक है, bean. So you must have seen these kind of stem जो twin twirl around करते हैं for just support, ठीक है. And a different species of pea is there that also form like this, ऐसे twirl करके plant से release होते हैं ना. So these are what, twinners and subaerial kind of stem. Another is climbers. Climbers में क्या आएगा, bougainvillea, ठीक है. वो वॉल से अटैच होके धीरे धीरे क्या करते हैं, वहीं पे ग्रो करते हैं उसी थ्रू वॉल अटैचमेंट से, ठीक. प्रोस्टेट वीक स्टेम में क्या क्या आएगा, ट्रेलर्स या क्रीपर्स, दे ट्रेड अलोंग द सर्फेस एंड डू नॉट क्लाइंब अप. अब जैसे कद्दू, इफ यू हैव सीन द प्लांट, सो कद्दू क्या करता है, ऐसे ये गोला से मान लो कद्दू है, तो इसका जो स्टेम है वो ग्राउंड से ही अटैच होकर वो ग्रो करता है. दे डोंट क्लाइंब अप और दे डोंट टेक सपोर्ट, दे टेक सपोर्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ओनली, ठीक. रनर्स, these are subaerial weak stem that grow horizontally along the soil surface. Example में lawn grass, brahmi and oxalis. Oxalis you have to remember, okay, like this one. I think is where yeah, runner. See, इसका क्या है, अटैच, देखो ये अटैचमेंट क्या है, these are stem. रूट भी अंडरग्राउंड है लेकिन स्टेम भी क्या है, आधा तो ऊपर है लेकिन इसका आधा पार्ट कहाँ है, नीचे. दैट इज वाई subaerial. स्टोलोन्स में क्या है, एग्जाम्पल में पेपरमिंट, स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन, यू हैव टू लर्न, ओके. स्टोलोन्स में क्या है, सब एरियल वीक पार्ट हॉरिजॉन्टली और ब्रांच्ड विद लॉन्ग इंटरनोड्स व्हिच कैन पास ओवर स्मॉल ऑब्स्टेकल. स्टोलोन्स आर प्रोपगेट वेजिटेटिवली लाइक रनर्स. दीज आर स्टोलोन्स. देखो रनर्स क्या है, ऐसे हैं, लेकिन स्टोलोन्स क्या हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं. फिर यहाँ फिर रूट, फिर यह होगा स्टोलोन्स, फिर यहाँ फिर रूट. Little bit difference is there. They only slight part of these kind of stems are underground. Otherwise, most of the part are aerial. And runners में क्या है, half aerial and half underground. Offsets. These are weak stems. These weak stems are one internode long, stout, slender, and run horizontally and terminate into the bud at a short distance that develop into adventitious root. Example में pistia and acorn. Both I think you have to remember. Okay. बस एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन अराइज ही होता है. सो ट्राई टू लर्न द एग्जाम्पल्स. नाउ अंडरग्राउंड स्टेम, अगेन नॉट इन सिलेबस. राइजोम, सकर्स, कॉम, ट्यूबर एंड बल्ब. यहाँ फिगर से देख लो, राइजोम लाइक अदरक लाइक है, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है. कॉर्न में क्या है, ये काइंड ऑफ वेजिटेबल इसको भी बोलते हैं, इसका नाम हमें अभी नहीं याद आ रहा है. अरवी, दिस इज फिगर ऑफ अरवी, ओके. एंड ये पोटैटो, ट्यूबर इज व्हाट, पोटैटो, एंड अनियन का बल्ब, ठीक है. We all have seen these 4 different kind of vegetable in our home. So ये modification of stem में ही आएगा, underground modification है, ठीक. पहला rhizome क्या है, it is a prostate thick stem growing horizontally beneath the soil surface. It has distinct node and internodes. The nodes bear small, इसकी बात हो रही है, ठीक है, bear small scale leaves with buds in their axial. Example में जिंजिबेर officinale यानी कि जिंजर, कुरकुमा अमेडा भी होगा.
जिंजर का देखो यहाँ पे क्या है, ये नोड्स और इंटरनोड्स दोनों यहाँ पे दिखते हैं। दो नोड्स के डिफरेंस के बीच या इंटरनोड और नोड यहाँ पे क्लियरली दिखते हैं। नेक्स्ट इज suckers. These are non-green slender stems that grow horizontally in the soil and ultimately come out to form a new aerial shoot. एग्जाम्पल में क्राइसेंथेमम यानी कि गुलदाउदी, ये क्या होते हैं, सकर्स होते हैं। ओके, सकर्स का फिगर नहीं दिया हुआ है। सी गुलदाउदी प्लांट if you have in your own house, so you must have seen कि ये लोग क्या होते हैं, स्टेम्स इन लोग का ग्रीन नहीं होता, ये लोग ब्राउनी काइंड ऑफ होते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं सॉइल के अटैचमेंट के थ्रू ही, ठीक है। एंड अगर उनका एक टिप बांध दोगी तो वो दूसरी तरफ से ग्रो करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर बांध दिया तो फिर वो लोग लैटरली यहाँ ग्रो करेंगे। तो उनका क्या है, अलग अलग काइंड से या अलग अलग नोड से नया नया एरियल शूट डेवलप करते रहते हैं, ठीक। फॉर्म क्या है, swollen condensed form of underground stem which grows in vertical direction in the soil. It store large amount of food. Amorphophallus या colocasia, या देखो अरबी लिखा ये, okay. Colocasia is अरबी. Now tuber, it is a swollen terminal end of underground stem branches. Each tuber has many notches on the surface called eyes or buds. They are actually reduced form of internodes which can grow into new plants. Example में Solanum tuberosum यानी कि पोटैटो। पोटैटो में वी ऑल हैव सीन कि छोटे छोटे क्या निकल जाते हैं, आई या बर्ड्स। दोज आई और बर्ड्स आर व्हाट, reduced form of nodes or internodes. Okay. Then bulb, it is highly reduced disc-like stem. It bears large, fibrous, adventitious root at its base. Leaf bases form bulblets. These bulblets grow into new plant. Allium cepa यानी कि अनियन, ठीक। इसकी बात हो रही है, बेस जो ये क्या होता है, हाईली अंडर रिड्यूस हो जाता है। एंड अगर इसी को वापस से क्या करो, ग्रो कराओ, तो ये नए स्टेम में ग्रो कर सकता है। सो एनी डाउट इन दिस? नो डाउट, आई सपोज। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ स्टेम। नाउ व्हाट इज द ब्रांचिंग पैटर्न स्टेम का? डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, लैटरल ब्रांचिंग है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग क्या होती है? इट अकर्स बाय डिवीजन ऑफ एपिकल ग्रोइंग पॉइंट और बड into two equal parts in a forked manner like this. फिगर से समझोगी ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। फोक्ड मैनर में क्या हो रहा है, पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर देखो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, लाइक दिस। अब ये वाला भी दो में होगा, फिर ये वाला भी दो में हो, लाइक दिस डिवीजन इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, कहाँ मिलता है? क्रिप्टोगेम्स यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसा डेवलपमेंट दिखता है। हाइयर हाइफी पाम ट्रीज इफ यू हैव सीन, सो उसमें दिखता है। कैनकसोरा या पेनांडेमस क्या है, टिंक्टोरियस। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। कहाँ दिखते हैं? क्रिप्टोगैम्स में। सिंपल आंसर। लैटरल ब्रांचिंग अकर्स फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ द नोड्स। अब कहाँ से लैटरल ब्रांचिंग हो रही है? जो अभी हमने बताया ना, एक्सिलरी बर्ड्स, ऐसे। सो एक्सिलरी बर्ड यहाँ होते हैं, नहीं, टर्मिनल एक्सिलरी, यस। सो एक्सिलरी बर्ड यानी कि जो एग्जैक्टली लीफ के पास से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वहां से जो ग्रोथ होता है स्टेम का, या वहां से जो स्टेम की ब्रांचिंग होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? लैटरल ब्रांचिंग। फिगर में भी दिया है, ठीक। एक अगर मान लो यहाँ पे से लीफ अराइज हो रहा है या यहाँ पे बर्ड है, तो इसी के नीचे से फिर क्या होगा, नया स्टेम का ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगा। नाउ फंक्शन ऑफ स्टेम, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है? इट बेयर्स लीव्स, फ्रूट, फ्लावर एंड सीड इन पोजीशन, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल टू रूट्स, लीव्स एंड। देखो ये चेन क्रिएट कर रहा है ना, creates a chain कहाँ पे? between roots and leaves, or we can say fruit, flower, etc. Next, it holds flower in suitable position so that pollination, fertilization can take place. Secondary, many stems store food and reserve food material. ये secondary function है, means कि जहाँ modification of stem आएगा वहां पे ये function आएगा, और without modification में क्या है? ये primary function है। okay. Some stems also help in photosynthesis and vegetative. Underground stem helps in pollination. Stem branches provide support to various parts. यानी कि कभी कभी सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ स्टेम क्या होते हैं? खाना भी स्टोर करते हैं। कुछ स्टेम क्या है? फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं। ओके, एनी डाउट? No, ma'am. Okay. So this one is the last one. Again, it is not in syllabus. You just have to remember these through the need point of view. क्या क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। एरियल स्टेम क्या होता है वो हमने देख लिया। और इसका मॉडिफिकेशन क्या क्या है? स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न्स, फिलोक्लेड, क्लैडोड्स एंड बुलबिल्स। इसमें से फिलोक्लेड्स पे आता है क्वेश्चन। फिलोक्लेड्स एंड क्लैडोड्स के आता है, ठीक है।
स्टेम टेंड्रिल्स क्या होते हैं? एक्सिलरी, एक्स्ट्रा एक्सिलरी, एपिकल बर्ड्स या फ्लोरल बर्ड। जितने भी टेंड्रिल्स यानी कि लाइक ये वाले प्लांट हैं ऐसे जो ग्रो करते हैं स्टेम्स, उनको किस में रख दिया गया है? स्टेम टेंड्रिल्स वाले में। एग्जांपल्स में एक्सिलरी वाले में पैसिफ्लोरा, एक्स्ट्रा एक्सिलरी वाले में लुफा या कुकुरबिटा यानी कि पंपकिन। एपिकल बर्ड क्या होते हैं? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टेंड्रिल्स, वाइटस विनिफेरा। सिर्फ ये दो याद रखो, पैसिफ्लोरा एंड पंपकिन वन। एपिकल बर्ड एंड फ्लोरल बर्ड नो। देन स्टेम थॉर्न्स में क्या है? स्टिफ, वुडी, शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं, जिसमें जितने भी स्टेम्स हैं, एग्जांपल में पोमोग्रेनेट ले लो, सिट्रस प्लांट्स ले लो, रोज प्लांट्स में भी यू हैव सीन कि इसके स्टेम क्या होते हैं? कांटेदार होते हैं। प्रिकल्स वाले क्या होते हैं? मॉडिफाइड स्टेम एंड कैन एक्ट एज अ क्लाइंबिंग ऑर्गन। यहाँ पे आता है आर्जिमोन मैक्सिमाना, रोजा इंडिका, ठीक है, बॉम्बैक्स मेलबेरी का सिंबल। पिल्लोक्लेड, इसका एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिल्लोक्लेड क्या होते हैं? मोस्टली जितने जेरोफिटिक प्लांट होते हैं जिनमें पानी नहीं होता है, मीन्स those plants which grow in dry regions, there are phylloclades development in them, ठीक है, like apanchia. Apanchia is very important example of phylloclade. Then cladodes, cladodes में रस्कस एस्पैरागस दोनों ही याद कर लो। Green photosynthetic stems, generally one internode, long nodes, they develop by the modification of only stem of branches. The true leaves of plant are reduced to scale or spines, like we can say cactus also, okay. Then bulbous में these are modified stems or floral buds arising in the axil of scale of foliage leaves. Leaves से ही development होता है bulbous का। Example में lilium यानी कि lily plant, ठीक। If you want you can have the figure also. Phylloclade कहाँ है? Spiny यानी कि अपेंशिया में है। Hooks, thorns, tendrils, pea plant है। Cladophylls एस्पैरागस में दिखेगा। ट्यूबरस सिस्टम्स कहाँ दिखता है? बल्बोफाइलम में, ठीक। सो आई थिंक वी विल कीप अप टू रूट एंड स्टेम। देन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक लीव। एनी डाउट इन द रूट एंड स्टेम पार्ट?